हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सर्कल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लोगोस, जिसमें बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है थॉट या साइंस ऑफ। Biology is defined as study of various aspects of living beings like plants, animals. इस बायोलॉजी में हम हर लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। Biology is the study of life from simplest form of plants and animals to highly complex structure of human beings. बायोलॉजी में हम एक वन सेल्ड एनिमल से लेकर के एक पूरे फॉर्म ह्यूमन बींग्स तक के बारे में पढ़ते हैं. It includes the study of how organisms are structured as well as how they function and relate to each other. बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि उन्हें कैसे बनाया गया है और वो कैसे फंक्शन करते हैं. बायोलॉजी को हम लाइफ साइंस भी कहते हैं बिकॉज इट मेक्स टू अंडरस्टैंड हाउ लिविंग बींग्स परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्ट्स विद द अदर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी की मेन ब्रांच होती है बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. ये वर्ड आप याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. चलिए अब हम थोड़ा बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में जान लेते हैं. Agriculture, the study of how best to grow and improve crops. Horticulture, development and management of orchards and gardens. Apiculture, rearing of bees especially for commercial purpose. Sericulture, breeding and treatment of silkworms for raw silk. Anthropology, study of physical and mental constitution of man with social conditions exhibited both in the present and the past. Study of insects को हम entomology कहते हैं. Medicine, study of structure and functioning of human body and mind in sickness and health. Agronomy, branch of agricultural science which deals with the study of crops and soils. Soil science, study of structure, types and dynamics of the soil. Breeding, to produce or procreate improved varieties by selective mating. Veterinary medicine, deals with the disease of domesticated animals and their health care. Fishery, occupation or industry of catching fish or other products of the sea, lakes and rivers. Poultry, science deals with study of domestic fowls such as chicken, ducks and geese. Dairy technology, application of science for the manufacture of milk products. Forestry, science of developing, cultivation and conserving forest. Microbiology, science that deals with the structure, function, uses, etc. of microscopic organisms. अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. Pharmacy, science that deals with preparing and compounding medicines and dispensing them according to the medical prescription. Forensic science is the study of application of scientific knowledge to questions of civil and criminal law. It includes use of fingerprints, blood typing, identification of narcotics, etc. Surgery. It involves physical operations to cure diseases or injuries to the body. Nutrition, study of the nourishment of human beings or other organisms. Physiotherapy, science of treatment of diseases, bodily weakness or defects by physical remedies such as massage and exercise. Genetic engineering, science that involves
manipulation at gene level so as to produce an organism with a new combination of inherited properties. फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी या कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो पूछ सकते हैं। Biomedical engineering, science for production of spare parts for man, implants, artificial limbs, heart, lung machines, etc. Food technology, application of science for processing and preservation of foods. मैनेजमेंट ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट को हम कहते हैं सिल्वीकल्चर। रेडिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, साइंस कनेक्टेड विथ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग मैटर लाइक composition, chemical nature, mode of formation and functioning. Biogeography, distribution of organisms on various parts of earth. Cytology, structure and functions of cells and their organelles. Ecology, relationship between organism and environment. लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स की स्टडी को हम एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। इम्यूनोलॉजी, रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। लिम्नोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर लेक्स, ponds and streams. Paleontology, fossils and their distribution in time. Psychology, behavior and working of mind. Parasitology, parasitic organisms. Study of diseases and their control, हम कहते हैं पैथोलॉजी। रेडियोबायोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी ऑन लाइफ। टैक्सोनॉमी, classification of organisms and their evolutionary relationship with other organisms. Teratology, malformation or birth defects. Zoogeography, distribution of animals over the earth. Zoopathology, diseases of animals.